जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। जन वल्लभा यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय श्री श्री राधा लीला माधव की। जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रमई की। जय श्री रम राम रामानुजा हनुमान जी की। श्रीला प्रभुपाद की। श्रीला महाविष्णु गोस्वामी गुरुदेव की। निताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नस्तप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। हरे कृष्णा
Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. So we welcome all devotees today, reading from Srimad Bhagavatam, 5th canto, 17th chapter. We start from text 5 and we'll read through until the purport of text 9. So 5 to 9. So I will just chant the shlokas. Tatra chatudar vidyamana chaturnamabis chaturdisham abhishpandanti nadipatim eva bini vishati shitala kananda chakshur badreti. This is text 5. I'll read the translation. On top of Mount Meru, the Ganges divides into 4 branches, each of which gushes in a different direction, east, west, north, and south. These branches, known by the names Sita, Alakananda, Chakshu, and Bhadra, flow down to the ocean. We will read text 6 now. Sita tu Brahma Sadanat, Keshara Chaladi, Giri Shikarebhyo, Adho Adhaha, Prashravanti, Gandamadana, Murdasho, Patitvantantarena, Bhadrasva Varsham, Prachyam Dishi, Sharas Samudram, Abhipravishyati. Translation. The branch of the Ganges, known as the Sita, flows to Brahmapuri, atop Mount Meru, and from there it runs down to the nearby peaks of the Kesharachala mountains, which stand almost as high as Mount Meru itself. These mountains are like a bunch of filaments around Mount Meru. From the Kesharachala mountains, the Ganges falls to the peak of the Gandamadana mountain and then flows into the land of Bhadrashva Varsha. Finally, it reaches the ocean of salt water in the west. Text 7. Evam malyavat chikkaran nishpatanti tato anuparata vega ketumalam abhichakshu praticham dishi saritpatim pravishyati. Translation. The branch of the Ganges, known as Chakshu, falls onto the summit of the Malyavan mountain, and from there cascades onto the land of Ketumala Varsha. The Ganges flows incessantly through Ketumala Varsha, and in this way also reaches the ocean of salt water in the west. Text 8. Bhadra chotarato meru shirasho nipatita giri shikarar giri shikaram atihaha shringavataha shringar avasya yandamana uttaranstu kurun abhitha udichyam dishi jaladim api pravishyati. Translation. The branch of the Ganges known as Bhadra flows from the northern side of Mount Meru. Its waters fall unto the peaks of Kumuda mountain, Mount Nila, Sweta mountain, and Shringavan mountain in succession. Then it runs down into the province of Kuru, and after crossing through that land, flows into the salt water ocean in the north. Text 9. Tathaivalakanandaha dakshinena brahma sadanat bahuni giri kutani atikramya hemakutat dhaimya kutani ati rabashattara ramhasa lutayanti bharatam abhivarsham dakshinashyam dishi jaladhim abhipravishyati yasyam snanartam chagacchataha pumsa pade pade aswamedha rajasuyadinam phalamna durbalam iti. Translation. Similarly, the branch of the Ganges, known as Alakananda, flows from the southern tip of Brahmapuri, Brahma Sadhana. Passing over the tops of mountains in various lands, it falls down with fierce force upon the peaks of the mountains Hemakuta and Himakuta.
After inundating the tops of those mountains, the Ganges falls down onto the tract of land known as Bharatavarsha, which she also inundates. Then the Ganges flows into the ocean of salt water in the south. Persons who come to bathe in this river are fortunate. It is not very difficult for them to achieve with every step the results of performing great sacrifices like the Rajasuya and Ashwamedha Yajnas. Please hear the purport. The place where the Ganges flows into the salt water of the Bay of Bengal is known as Ganga Sagara, or the meeting place of the Ganges and the Bay of Bengal. On Makara Sankranti, in the month of January-February, thousands of people still go there to bathe, hoping to be liberated. That they can actually be liberated in this way is confirmed herein. For those who bathe in the Ganges at any time, the results of great sacrifices like the Ashwamedha and Rajasuya Yajnas are not at all difficult to achieve. Most people in India are still inclined to bathe in the Ganges, and there are many places where they can do so. At Prayag, Allahabad, many thousands of people gather during the month of January to bathe in the confluence of Ganges and Yamuna. Afterward, many of them go to the confluence of the Bay of Bengal and the Ganges to take bath there. Thus, it is a special facility for all the people of India that they can bathe in the water of the Ganges at so many places of pilgrimage. Prasanatma Prabhu, just do the translation and the purport of text 9. Text 9. Jai. इसी प्रकार ब्रह्मपुरी दक्षिण दिशा से होकर बहती है। विभिन्न प्रदेशों में पर्वतों की चोटियों को पार करती हुई यह अत्यंत वेग से हेमकूट तथा हिमकुट पर्वतों की चोटियां पर गिरती पर्वतों की चोटियों को आप्लावित करती हुई गंगा भारतवर्ष नामक भूभाग में गिरती और उसे अपने जल से आपूरित करके चलती। तत्पश्चात यह दक्षिण दिशा में लवण सागर में मिल जाती है। जो व्यक्ति इस नदी में स्नान करने आते हैं वे भाग्यशाली उन्हें पग पग पर राजसूय तथा अश्वमेध जैसे महान यज्ञों के करने का फल प्राप्त करना दुष्कर नहीं। अब भी जहाँ गंगा की खाड़ी के लवण जल में गंगा नदी मिलती है वह स्थान गंगा सागर कहलाता है। जनवरी फरवरी मास में मकर संक्रांति के अवसर पर आज भी यहाँ हजारों लोग मुक्ति प्राप्त करने की अभिलाषा से स्नान करने आते हैं और वास्तव में उनको मुक्ति प्राप्त होती है, जिसकी पुष्टि यहाँ की गई। जो लोग किसी भी समय गंगा स्नान करते हैं उन्हें अश्वमेध तथा राजसूय जैसे महान यज्ञों का फल प्राप्त होना कठिन नहीं होता। आज भी भारत के अधिकांश लोग गंगा में स्नान करने के इच्छुक हैं और ऐसे अनेक स्थान हैं जहाँ वे स्नान करते हैं। प्रयाग इलाहाबाद में प्रति वर्ष जनवरी मास में गंगा तथा यमुना नदी के संगम पर स्नान करने के लिए लाखों लोग एकत्र होते हैं। इसके बाद वे गंगा की खाड़ी तथा गंगा के संगम में स्नान करते हैं। भारत के लोगों के लिए यह विशेष सुविधा है कि वे अनेक तीर्थ स्थानों पर गंगा स्नान कर सकते हैं। Jai Shri Prabhupada Bhakti Vedanta Purports Ki Om Ajnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha Sri Chaitanya Mano Bhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam
Vandeham Shri Guru Shri Utapadakammalam Shri Gurum Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamscha He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gorange Radhe Vrindavanishwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatrubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Paditanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jai Shri Prabhupada Ki. So we welcome devotees for a Sunday morning program on Srimad Bhagavatam. This whole chapter is actually on how Mother Ganga is coming into this world. And as you hear the beautiful shlokas that we have been reading, you will realize just how descriptive Srimad Bhagavatam is. Not only does Bhagavatam give us so much philosophy, but Bhagavatam also gives us so much practicality. Bhagavatam gives us so many wonderful pastimes of Krishna. And pastimes of his devotees. And at the same time, in Bhagavatam, like this whole chapter, we understand the nature of the universe also. Bhagavatam is like a transcendental tourist guide to all these beautiful spiritual places, and even material universe is so beautifully described. We must remember one very important thing. Just because we have not seen Mount Meru doesn't mean Mount Meru does not exist. If the Ganges can come to this material world, she is evidence that all these great mountains are existing actually. It is a fallacy of logic to say that if I have not seen something, therefore it doesn't exist. You know, supposing I have never seen President Biden of US, never seen him in person. That means he does not exist. It cannot be, isn't it? So it is illogical. Just because we have not seen something does not mean it does not exist. Srimad Bhagavatam is Purana Amalam. It is the most sweetest, but it is recorded history, Puran. And this Mother Ganges, her falling into this world is not accidental. Prabhupada writes in the purport and in the description here that we are so fortunate in India, in Bharatvarsha, that actually we can get to touch Mother Ganga
in so many different places. यहाँ तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि हम बहुत ही भाग्यशाली हैं भारत में रहने वाले लोग, क्योंकि हमें अलग अलग स्थानों पर गंगा को स्पर्श करने का अवसर मिलता है। You can go to Ganga Sagar, which is Bay of Bengal. That area you can take darshan and take bath. बंगाल की खाड़ी के पास जहाँ गंगा सागर है, उधर आप जा सकते हैं और उधर भी गंगा स्नान कर सकते हैं। You can go to Prayag in Allahabad. You can take bath there. इलाहाबाद में प्रयाग में आप चाहते हैं तो उधर भी गंगा स्नान कर सकते हैं। If you go to Vrindavan, you can go to Yamuna Ji. She is considered to be most holy part of Ganga actually. आप वृंदावन यदि जाएं तो उधर यमुना जी है, यमुना जी को माना जाता है कि वे गंगा का सबसे Most holy part of Ganga. सबसे पवित्र उनका भाग माना जाता है। In fact, Prabhupada writes in purport, between Yamuna and Ganga, Yamuna is considered more dear to the devotees than even Ganga. ऐसे कहा जाता है कि भक्तों के बीच में कि गंगा और यमुना की तुलना करें तो यमुना को ज्यादा महत्व को प्रिय माना गया है। Why? Because Krishna touched Yamuna Ji. क्यों? क्योंकि कृष्ण ने यमुना जी का स्पर्श किया। And we are very fortunate because not far from here, in Dwarka Dham, Ganga Mata has also come in the form of Gomti Ganga. हम भी बहुत भाग्यवान हैं क्योंकि यहाँ से बहुत दूर नहीं है, द्वारका में ही गंगा गोमती के रूप में विद्यमान है। And there also she goes into Sangam, right, with the ocean. और उधर उनका संगम भी होता है समुद्र के साथ। Maharaj told us when we first came to Dwarka that if you take bath in Gomti Ganga, this part of Gomti Ganga is very good for the diseases actually. महाराज ने मुझे एक बार कहा था कि यदि तुम गोमती में स्नान करते हो तो ये गोमती का जो ये भाग है ये हमारे रोगों को भी दूर भगाने के लिए बहुत ही उपयोगी है। So Mother Ganga, she's a great devotee of Krishna. तो माता गंगा जो है वे भगवान कृष्ण की बहुत महान भक्त है। So many rivers are there in the world, but why she is so revered? बहुत सारी अलग अलग नदियां हैं पूरे ब्रह्मांड में, लेकिन इन्हीं की क्यों ज्यादा नामना है? Because she was touched by the toe of Lord Vishnu in his form as Lord Vamandev. क्यों? क्योंकि वामनदेव भगवान के रूप में ये गंगा माता को उनके चरण के अंगूठे से स्पर्श किया गया है। That's why it is stated in Shastras that she is coming from the toe of Lord Vishnu. और इसलिए शास्त्र में कहा गया है कि विष्णु के अंगूठे से वे प्रकट हुई है। Some people say, is she coming from the toe or she was already there and she was pierced and the water came? कुछ लोग ऐसी कहीं बहस करते हैं कि क्या गंगा भगवान के अंगूठे से बह रही है या तो वो पहले थी और भगवान के अंगूठे से छेद हुआ और उसमें पीने लगी। It is stated in Shastras that the moment one is touched by Krishna, that day actually our real life begins. तो शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि जब भी व्यक्ति को कोई भी व्यक्ति को कृष्ण का स्पर्श मिलता है उसी दिन से उसका नया जीवन प्रारंभ होता है। So that is why Ganga is revered, because the day that Lord Vishnu touched her with his toe and she came into this world, that was the day actually it's considered to be her origin. तो इसलिए जिस दिन से भगवान के चरण कमल के अंगूठे से स्पर्श होने के बाद वे इस जगत में बहने लगे, तभी से सही मायने में उनका नया जन्म हुआ। In the 11th canto, 5th chapter, 42nd verse, this point is very nicely given by, it is given in Bhagavatam. I am not sure who gives it. Maybe it is the Yogendras who give it to King Nimi. 11.5.42. 11:5:42 में भागवतम में तो याद नहीं के द्वारा है, शायद योगेंद्र के द्वारा कहा गया है। Swapadamulam bhajata priyasya tyaktanyabhavasya hare pareshaha vikarmayacho patitam katanche dhunoti sarvam hridhi sannivishtaha स्वपादमूलं भजता प्रियस्य त्यक्तान्यभावस्य हरिपरेशः विकर्मया चोत्पतितं कथाञ्चे धुनोति सर्वं हृदि सन्निविष्टः स्वपादमूलं भजत प्रियस्य त्यक्तान्यभावस्य हरिपरेशः
विकर्मया चोत्पतितं कथांचे दूनोति सर्वं हृदि सन्निविष्टः. This verse was quoted by Srila Prabhupada quite a few times. And the translation is very important. One who has thus given up all other engagements and has taken full shelter at the lotus feet of Hari, the Supreme Personality of Godhead. That person is very dear to Krishna. If such a surrendered soul accidentally commits some sinful activities, the Supreme Personality of Godhead, who is actually seated in everyone's heart, immediately he takes away the reactions to such sins. So this is a very important verse in Bhagavatam, because it tells us the power of being touched by Krishna. How to touch Krishna's lotus feet? It is not just that we go to the deity and we touch his feet. We are now seated here, we are not touching his feet. But Bhagavatam tells us, if you give up all other engagements and surrender to Krishna, that is touching his feet. So actually, we are touching Krishna's lotus feet by our actions in devotional service. It is not a ceremony to just touch Krishna's feet. Of course, his lotus feet is so powerful that just by touching Mother Ganges, she had become purified. But we must also understand that Mother Ganga flows only for the pleasure of Krishna. That is why she is a sacred river. These sacred rivers, Alakananda and Mother Ganges and other rivers, they are flowing for the pleasure of Krishna. So because they have given up all other engagements except to serve Krishna. So even we, if we give up any engagement just to come here today to hear Bhagavatam, then even if we commit some sinful activities accidentally, sometimes Prabhupada said, out of habit, we continue to perform an activity which we should stop. But it is habitual, But 11.5.42 tells us that Krishna is Hriddhi Sannivishta, he is in our hearts. And he will immediately wash away the effects of that sin. This is the greatness of Krishna. And because Mother Ganga is a devotee of Krishna, she is also doing the same thing in this world. Prabhupada writes in the purport of text 9 that it is confirmed by Shastras that anyone taking bath in Mother Ganga, they will attain the same results of liberation as they would in Ashwamedha or even Rajasuya sacrifices.
भी व्यक्ति गंगा में स्नान करता है उसको अवश्य ही मुक्ति के बाद उसके लिए खुले हो जाते हैं जो मार्ग राजसीय और असुरे यज्ञ करने के पश्चात मिलते हैं। So from this we can learn that the nature of devotees is very often a reflection of the nature of the Lord, and nature of Lord is very often reflection of the nature of devotees. तो हमें फिर पाया जाता है कि भगवान का जो स्वभाव है वो कभी कभी भक्त के स्वभाव के अंदर भी प्रतिबिंबित होता है और कभी कभी भक्त का जो स्वभाव है वो भगवान के अंदर भी प्रतिबिंबित होता है। The episode of Mother Ganga is not only in the 5th canto. ये गंगा माता का जो प्रसंग है वो खाली केवल 5वें स्कंद में नहीं है। If you study the 9th canto, 8th and 9th chapter, Mother Ganga's episode is also there. 9वें स्कंद के 8वें और 9वें अध्याय का यदि आप अभ्यास करें तो उसमें भी गंगा माता का वर्णन आता है। And he gives us a very deep insight into the glory of Mother Ganga. और ये अध्याय हमें गंगा माता की महिमा के अंदर बहुत गहन महिमा देती है। In the beginning, actually, Mother Ganga was only flowing in the upper regions of the world and not in this material world. She is only moving in the spiritual world. पहले के समय में गंगा माता जो है वे केवल आध्यात्मिक जगत में यानी कि ऊपरी भागों में ही बहती थी, भौतिक जगत में नहीं बहती थी। There was a great sage known as Aurva. और वह करके एक महान संत हो गए And his disciple was a very famous king known as Sagara Maharaj. और उनके बहुत ही जो चरित्र शिष्य थे, प्रख्यात शिष्य थे सगर महाराज। He performed an Ashwamedha sacrifice many years ago. बहुत साल पूर्व उन्होंने अश्वमेध यज्ञ का स्थापना किया And in doing so, he satisfied the Supreme Personality of Godhead. और ऐसा करने से वे पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर को प्रसन्न करता है। But you all know, for the Ashwamedha to be complete, the sacrificial horse must move around the world, isn't it? लेकिन आपको तो पता है जैसे अश्वमेध यज्ञ किया जाता है तो वो करने के लिए घोड़े को हर जगह विचरण करने के लिए घुमाया जाता है। Just when Sagara Maharaj was going to finish the sacrifice, Indra stole the sacrificial horse. ये सगर महाराज जो थे वे यज्ञ को पूरे करने ही जा रहे थे कि उसके पहले इंद्र ने उनका घोड़ा चुरा लिया। Indra is always stealing the horse. Huh? ये हमेशा घोड़ा चुराता है। Prithu Maharaj in 4th canto, he also stole the horse. तो महाराज का भी घोड़ा चुरा लिया। So Sagara, he had a son. His name was Sumanti. तो सगर के एक पुत्र थे सुमंती And Sumanti had 60,000 sons. और सुमंती के 60,000 पुत्र थे। So immediately when the horse was stolen, King Sagara, he asked his sons and his grandsons to go and find the horse, because otherwise the sacrifice is not complete. तो जैसे ही सगर महाराज को पता चला कि घोड़ा चुराया गया है या तो गायब हो गया है तो उन्होंने अपने पुत्र और पौत्रों को कहा कि तुरंत जाकर के आप घोड़े को खोजिए। Bhagavatam tells us these 60,000 sons, they followed the footprints of the horse. Then it went deep into the earth, and they dug very deep into the earth. तो भागवत वर्णन करता है कि ये सभी 60,000 पुत्रों ने सगर महाराज के पुत्रों और पौत्रों ने घोड़े के पदचिन्हों का अनुगमन किया और धीरे धीरे वो खोदते खोदते नीचे चले गए। And they dug very deep, and in the northeastern corner of that part of the earth, they saw the horse tied to a tree in the ashram of Kapila Muni. और उत्तर पूर्वी दिशा की ओर जाकर के उन्होंने नीचे पाया कि एक वृक्ष के साथ घोड़े को बांधा गया है जहाँ कपिल मुनि का आश्रम है। Now you all know who Kapila Dev is, isn't it? और अभी आप जानते हैं कपिल देव कौन है? He is non-different from the Supreme Personality of Godhead. वे साक्षात भगवान ही हैं, उनसे अभिन्न हैं। In the 3rd canto, he is the founder of Sankhya philosophy. तीसरे स्कंद में फिलोसॉफी के साथ And he spoke so much of Sankhya philosophy to his mother Devahuti. और उन्होंने बहुत सारा सांख्य तत्व ज्ञान अपनी माता देवकी को। So these grandsons of Sagara, they saw Kapila Muni seated in meditation. तो ये सगर महाराज के जो पौत्र थे उन्होंने देखा कि कपिल भगवान इधर ध्यान में मग्न है And they saw the horse next to Kapila Dev. और उन्होंने कपिल देव के बाजू में ही बगल में घोड़े को भी देखा। Because they were very proud and haughty, and they thought they were very powerful, they spoke very harshly and accused Kapila of actually being the thief of the horse. और चूंकि ये सभी अभिमानी थे, गर्विष्ठ थे, मदमस्त थे, इसलिए ये बहुत ही तीखे वचनों में कपिल भगवान
We must be very careful when we find fault with people. हमें बहुत ही सावधान रहना चाहिए जब हम दूसरों के दोष निकालते हैं। And we must be extra careful when we find fault with devotees. और हमें विशेष सावधान रहना चाहिए जब हम भक्तों के बीच में दोष निकालते हैं। And these great sons, grandsons, they found fault with the Supreme Personality of Godhead Himself. So they accused him of being a thief. And they said, kill him, kill him. Because of their being offensive to Kapila Dev and insulting a great personality, all the 60,000 sons of grandsons of Sagara, what happened to them? Fire from their body emanated and burnt them all to the ground, and they became just ashes. In Bhagavatam it is stated that some people think that actually Kapila Dev became angry and he burned the sons, but actually it is not true. Because Bhagavatam says that great personalities, they do not get upset when others blame them for something. They don't become upset when someone criticizes them for something. But Krishna becomes upset when you upset these personalities. And by your own sinful reactions, you destroy yourself. That's why in our devotional service, we must be very careful how we work with devotees. Maharaj said, even in our dreams, we should not criticize devotees. And now we want to welcome a great devotee, Rishikesh Prabhu ki. Welcome, Rishikesh Prabhu, welcome. Jai. So that is why the sons, the grandsons of Sagara, they died not because of the anger of Kapila Dev, but because when you cause harm to sadhus and devotees, the harm comes to you. So now how? The sons of Sagara had died and the horse was still in Kapila Dev's ashram. The Ashwamedha sacrifice could not be finished. Sagara Maharaj had another son, Asamanjasa. He was very peaceful in personality. And he had only one son, Amsuman. And he was a very saintly personality also. So Sagara Maharaj told his grandson, you please go and get the horse so that we can finish the sacrifice and please Krishna. So with great determination, Amshuman decided to go to the same place where he followed the footsteps and he saw Kapila Dev. Instead of finding fault with Kapila Dev, he fell at the lotus feet of Kapila Dev and he sang beautiful prayers to Kapila Dev. And Kapila Dev explained to him the path of knowledge and devotional service.
And then being pleased with Anshuman, he said, here is the horse. It's been waiting here for a long time. Take the horse back and bring it back and finish the Ashwamedha sacrifice. और वे अंशुमन के चरित्र से प्रसन्न हो गए कपिल देव और उन्होंने कहा कि ये रहा घोड़ा बेचारा कब से प्रतीक्षा कर रहा है इसको लेके जाओ और अश्वमेध यज्ञ पूर्ण करो. Then Anshuman asked, what happened to my forefathers? Where are they? लेकिन अंशुमन ने पूछा कि मेरे पूर्वजों का क्या हुआ, वे कहाँ चले गए? And Kapila Dev said, you see this mound of ash? These are your uncles. कपिल बाबा ने कहा कि ये तुमने राख का जो ढेर दिख रहा है ये तुम्हारे पूर्वज हैं. So Anshuman asked, is there any way for them to also be liberated from their sins and the reactions of their sins? तो अंशुमन ने पूछा कि ऐसा क्या कोई उपाय है कि जिसकी वजह से ये अपने पाप कर्मों से मुक्त हो सके? You are the Supreme Personality of Godhead. Surely you can deliver them, O Lord. हे प्रभु, आप स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, साक्षात भगवान हैं, आप ही इनका उद्धार कर सकते हैं. And to his surprise, Kapila Dev said, I don't have the capacity to deliver them. Only my great devotee Ganga, she has the capacity to deliver them because her devotion to me is unparalleled. क्योंकि इधर हमें आश्चर्य होता है कि भगवान कपिल देव ऐसा कहते हैं अंशुमन को कि मेरी क्षमता नहीं है इनको पावन करने की, इनकी मुक्ति करने की, लेकिन मेरी भक्त जो अनन्य भक्त जो है गंगा, उसकी क्षमता है इनका उद्धार करने की. Actually, Shastras tell us Krishna alone can deliver someone. शास्त्र कहते हैं कि कृष्ण अकेले ही सबको उद्धार कर सकते हैं. But he's so humble that he always gives credit to his devotees in order to glorify them. लेकिन कृष्ण खुद इतने विनम्र हैं कि वे बहुत बार अपने भक्त को क्रेडिट देते हैं ताकि उनकी महिमा हो. Krishna gave credit to Arjuna and the Pandavas for winning the battlefield of Kurukshetra, isn't it? कुरुक्षेत्र की युद्धभूमि को जीतने के लिए कृष्ण ने अर्जुन और पांडवों को यश दिया. But actually, Mayai Vaite Nihata Purva Evam Nimitta Matra Bhavya Savya Sachi. Actually, Krishna said in Bhagavad Gita that actually you are only instrument, but by my arrangement, everyone who is supposed to die, they have been killed already. कृष्ण ने पहले से ही भगवद गीता में तो कह दिया था कि निमित्त निमित्त मात्र भव सव्य साची, तू मेरा निमित्त मात्र है. तो उन्होंने पहले से ही सबको मार के रखा था. So Anshuman circumambulated Kapila Dev. He brought the horse back to Sagra Maharaj, his grandfather, and he finished the Ashwamedha sacrifice, and Krishna became very pleased with him. और इस प्रकार अंशुमन ने कपिल भगवान का प्रदक्षिणा किया और फिर घोड़ा लेकर के सगर महाराज के पास पहुंचा और अश्वमेध यज्ञ पूर्ण किया और कृष्ण भी अंशुमन से बहुत प्रसन्न हो गए. But Anshuman still had one more duty to finish. लेकिन अंशुमन की एक और कर्तव्य था जो आधार है. How to deliver the 60,000 sons. ये 60,000 पुत्र जो थे उनका कैसे उद्धार किया जाए. And so he sat down for a long time to perform austerities. तो इस प्रकार वे तप करने के लिए एक यज्ञ में बैठ गए. But he could not bring Mother Ganga to this material world. लेकिन वे गंगा को अवतरित नहीं कर पाए And he died. और वो मर गए. His son Dilipa, he continued the same austerities. उनके पुत्र दिलीप, उसने भी वही तपस्या जारी रखी, But he also died. लेकिन वो भी मर गए. And he left his son King Bhagirath. और उनके पुत्र हुए भगीरथ. Bhagirath was a great devotee of the Lord. He was a great devotee. And he, right, prayed very hard to Mother Ganga. And Mother Ganga became so pleased that she finally appeared before him. और माता गंगा इतनी प्रसन्न हो गई कि वे अंत में उनके सामने प्रकट हुए. And he asked her that my uncles actually, they somehow or another had offended the Supreme Personality of Godhead. The only way for them to be delivered from the reactions of their sin is by the touch of a pure devotee like you, Mother. Please come and please deliver them. तो उन्होंने ये प्रार्थना किया कि हे माता, मेरे जो ये चाचा हैं, ये चाचाओं का उद्धार केवल आपके स्पर्श मात्र से ही होगा. यदि आप स्पर्श करेंगे तभी इनका उद्धार होगा. Mother Ganga agreed. और माता गंगा सहमत हुई. But she said, I have a problem. लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे एक दिक्कत है. When I fall from the spiritual world, जब मैं आध्यात्मिक जगत से नीचे अवतरित
and I hit the surface of this earth, और यदि मैं ये पृथ्वी की जो सपाटी है my water will be so powerful उसका स्पर्श करोगे तो मेरा पानी का जो फ्लो है वो इतना शक्तिशाली होगा that if there's nothing to control that force, तो इतना शक्तिशाली कि यदि उसको धारण करने वाला कोई नहीं है I will pierce through Mother Earth तो मैं पृथ्वी को भेद करके चली जाऊँ and I will go down to the lower planets. और मैं निम्न लोगों तक चली जाऊँ So, who is going to contain my force? तो मेरे ये जो फोर्स है मेरा उसको कौन धारण कर पाए Then Mother Ganga said, I have another concern. फिर माता गंगा ने कहा कि मेरा एक और सुझाव In this material world, people will come and take bath in my water लोग आएंगे मेरे पानी में स्नान करेंगे and they will leave all their sins in my waters. और वे अपने पाप मेरे पानी में छोड़ के चले जाएंगे They will be free. वे तो मुक्त हो जाएंगे Who is going to clean my sins? मेरे ऊपर जो पाप का ढेर हो गया उसको कौन साफ करेगा Because I have to carry their sins now. क्यों क्योंकि मुझे उनके पाप लेकर के चलना पड़ेगा So Prabhupada writes in that purport, वो तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं that the spiritual master also has to carry the sins of his disciples. कि आध्यात्मिक गुरु को भी अपने शिष्य के पाप अपने ऊपर उठाने पड़ते हैं And the spiritual master can sometimes become sick and health may suffer because of the sins of his disciples. और आध्यात्मिक गुरु कभी कभी पाया जाता है कि उनको कोई शारीरिक बीमारी है या शारीरिक तकलीफ है तो वो शिष्य के पाप के कारण होती So Prabhupada says the disciples of a spiritual master must behave themselves. है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि गुरु के जो शिष्य होते हैं उन शिष्यों को अच्छा बर्ताव करना चाहिए And not create more sins. और नए पाप नहीं पैदा करने चाहिए And in that way, they are really serving their spiritual master very nicely. और ऐसा करने माध्यम से ही वे अपने गुरु की सबसे सर्वोत्तम सेवा कर पाएंगे So Mother Ganges said, help me with these two questions and I will come. तो माता गंगा ने कहा कि ये दो प्रश्नों का आप जवाब दे दीजिएगा तो मैं आपकी मदद कर पाऊंगी So Bhagirath said, when pure devotees bathe in your water, Mother, तो भगीरथ ने कहा कि हे माता जब कोई शुद्ध भक्त आपके अंदर स्नान करेंगे they will counteract all the sinful reactions in you. तो वे आपके अंदर जितने भी पाप हैं उनका भी प्रतिशोध कर देंगे Why? क्यों कैसे Because these pure devotees, in the core of their hearts, they are always carrying Krishna. क्यों क्योंकि ये जो शुद्ध भक्त जो होते हैं वे अपने अंतःकरण में हृदय में हमेशा कृष्ण को धारण किए हुए हैं। So when pure devotees bathe in Mother Ganges, they are not bathing to become purified. तो जब शुद्ध भक्त गंगा में स्नान करते हैं तो वे खुद पावन होने के लिए नहीं जाते They are coming to help Mother Ganga counteract the sins of others who are putting it in the water. वे इसलिए जाते हैं कि वे गंगा माता की मदद करने जाते हैं कि जो दूसरे लोगों ने पाप उसमें भर दिए हैं उसको भी पावन करने के लिए जाते Tirti kurvanti tirtani swantaha stena gadabritaha. This shloka is so nicely stated. I think it is first canto, 13th chapter, 10th verse, 1:13:10. 1:13:10 में ये श्लोक है तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि Tirti kurvanti tirtani. In other words, the devotees of the Lord, they themselves are tirthas. दूसरे शब्दों में भगवान के जो भक्त होते हैं वे खुद साक्षात तीर्थ के समान होते हैं So Bhagirath told Mother Ganga that even though you are in difficulty because so many people will come to give you all these sins, but we have many devotees in this world. And these devotees, they will come and bathe in the water and they will help you, Mother. तो भगीरथ ने कहा गंगा माता को कि भले ही आम जनता आपके अंदर पाप छोड़ के जाए लेकिन हमारे पास ये दुनिया में बहुत सारे ऐसे शुद्ध भक्त हैं कि जो आएंगे आपके अंदर स्नान करेंगे और आपके पाप भी हर देंगे So this is a very important point to learn from Mother Ganga's episode today. तो ये माता गंगा का जो प्रसंग है आज का इसमें से हमें सीखने के लिए एक बहुत ही सुंदर पाठ है Actually, the real tirtani is actually devotional service. सच्चा जो तीर्थ है वो है भक्ति में सेवा That's why Srila Prabhupada said, in the translation of 6.1.15 of Srimad Bhagavatam, Srila Prabhupada translates the shloka, Kechit kevalaya bhaktya vasudeva parayanaha agham dunvanti katsyena niharam iva bhaskaraha. In that shloka, it is very nicely stated by Shukadev Goswami that only by pure devotional service, right, which is rendered to Vasudeva and which is rendered in such a way that there is no attachment to anything material,
or to the byproducts of devotional service, only that devotional service can completely eradicate sinful reactions. ये श्लोक बहुत ही सुंदर कहा है कि केवल या केवल भक्ति इनके प्रति वासुदेव के प्रति और कैसी भक्ति कोई भी भौतिकता से रहित भक्ति या तो भक्ति की जो अन्य शाखाएं हैं या भक्ति से मिलने वाले जो फल हैं उनसे भी बिना आसक्ति वाली ये भक्ति जो है वही हमें हमारा So actually, Prabhus and Matajis, even if we cannot take bath in Mother Ganga, we should always perform sincere devotional service. तो प्रभु जी माता जी एक चीज यहाँ पे है भले ही हम शायद गंगा स्नान कर पाए या न कर पाए लेकिन हमें हमेशा गहन और गंभीर भक्ति में सेवा करनी है. And whatever sins that are coming, swapada moolam, bhajata priyasya, Krishna, he himself will wash away those sins. He himself will wash away his sins. तो हमारे ऊपर जो भी पाप आ रहे हैं वो अपने आप ही कृष्ण स्वपाद मूल कि हमारे हृदय में स्थित बैठे हुए हैं ये हमारे पाप को डाल. Because he's hriddhi sannivishta, he's in the heart. वे हृदय में है हृदय सन्निविष्ट है. When Mother Ganga heard Bhagirath's argument, she became convinced. जब माता गंगा ने भगीरथ की दलील को सुना तो तब वे सहमत हो गए. Okay, I will come. उन्होंने कह दिया कि ठीक है मैं But who is going to contain me? लेकिन मुझे कौन धारण करेगा. So Bhagiratha went to see Lord Shiva. तो फिर भगीरथ जी भगवान शिव को मिलने के लिए चले गए. And he performed great austerities. And when Lord Shiva became very pleased, he appeared before him. और उन्होंने बहुत दिव्य आराधना की और जब भगवान शिव प्रसन्न हो गए तो वे उनके सामने प्रकट हुए. And Bhagiratha told Lord Shiva that you are the greatest of all personalities in the three worlds. Only you will be able to contain Mother Ganga. Please help us here. तो भगीरथ ने भगवान शिव जी को कहा कि आप अकेले ही केवल एक ऐसे महान व्यक्ति हैं पूरे ये तीनों लोगों में कि आप ही ये गंगा माता को धारण कर. You will realize in Bhagavatam that Lord Shiva has to perform all the difficult tasks, isn't it? आप भागवत में पाएंगे कि भगवान शिव के माध्यम पे बहुत ही कठिन कठिन टास्क आते हैं. He had to get ready to receive Mother Ganga, which is very difficult. उन्होंने तैयार होना है माता गंगा का फोर्स है कि वो बहुत ही कठिन है. And when the Devatas and the Asuras were churning milk ocean, he had to swallow the poison also. जब देवता और असुर ये समुद्र मंथन कर रहे हैं तभी उनको विष का पान करना पड़ता है. But nature of devotee is that they are always prepared to sacrifice. लेकिन भक्त का स्वभाव ही ऐसा होता है कि वे हमेशा अपना सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हैं So that others can benefit. ताकि दूसरे लोगों का कल्याण हो. So if today there is only one plate of prasadam left and you only have that one plate, तो आज यदि एक ही प्लेट बच्चे को प्रसादम की और आपके सामने हो and somebody comes and asks you, Prabhu, I'm hungry, can I take that plate? और कोई व्यक्ति आए कि प्रभु मैं भूखा हूँ और मैं प्लेट ले सकता हूँ क्या, You should think of Lord Shiva तो आपको भगवान शिव के बारे में सोचना चाहिए and give that plate. और ये प्लेट उनको दे देना चाहिए. So Lord Shiva was very happy. He said, I will do this service. तो भगवान शिव बहुत ही प्रसन्न थे कि हाँ मैं ये सेवा करूँगा. And at the right time, Mother Ganga came through the coverings of the material universe. और सही समय पे निश्चित समय पे माता गंगा ये पूरे ब्रह्मांड को भेदते हुए नीचे आई. And she came at that time when Vamandev had pierced the outer covering with his toe. और वे उस समय को आई जहाँ पर वामन भगवान ने अपने चरण कमल के अंगूठे से उसको छेद डाला. You see how Krishna has arranged for the whole thing. आप देखो कि कैसे कृष्ण ने पूरा अरेंजमेंट किया है. A devotee cannot move without the benediction of the Lord. कोई भी भक्त हो वो भगवान के आशीर्वाद के बिना दिन का भी नहीं खिला सकता. Mother Ganga wanted to come to the world, गंगा माता ये दुनिया में आना चाहती थी but she needed the touch of Krishna first. लेकिन उनको कृष्ण के स्पर्श की आवश्यकता, Brahma Sparshanam. ब्रह्म स्पर्श की आवश्यकता. And then she came down. और फिर वे नीचे आई. And as she came down, Lord Shiva was very attentive to how she was coming down. और जैसे ही वे नीचे आ रही थी तो भगवान शिव बहुत ही एकाग्रचित्त होकर के देख रहे थे कि वो कैसे आ रही है. Because if she comes down and he misses, then finished. क्योंकि यदि वो अलग मार्ग पे जा रहे हैं और उसको कैच नहीं कर पाएंगे तो मिस हो जाएगा. And so he very attentively looked out for Mother Ganga and he contained her in his matted locks of hair. और बहुत ही ध्यानपूर्वक उन्होंने गंगा का अवतार देखा और एकदम प्रवीणतापूर्वक उन्होंने अपनी जटा में
उसको समेट, And so the force of Mother Ganga was controlled. और इस प्रकार माता गंगा का जो बल वो आवेग था वो उन्होंने धारण कर लिया, And now she followed Bhagirath. और फिर वो भगीरथ की ओर पीछे And पीछे as she followed him, she inundated the world wherever she went. और जहाँ जहाँ वो गई बहती गई उधर सबको पावन करती गई, And she formed what you see today as Ganga. और इस प्रकार से वो गंगा के रूप में अवतरित And after she had formed all of Ganga, she followed Bhagiratha into the deeper part of the world. और जब पूरे ऊपरी तल में पृथ्वी के वो आ चुकी गंगा के रूप में फिर वो भगीरथ का पीछा करते करते नीचे के लोक में भी गई। That is why Maharaj told us, you will see Mother Ganga on the surface, but from Gangotri, she's coming from below. She's gone below actually. So she's gone below because of this pastime actually. तो महाराज कहते हैं कि धरातल पर हम देखते हैं गंगा को, लेकिन गंगोत्री से हम देखते हैं कि वो पृथ्वी के नीचे के भूभाग में वो बहती। And so she flowed into the land where the ancestors, their ashes were, और वे उधर तक बहती गई जहाँ इनके पूर्वज सभी की राख हुई। And by doing that, she liberated all of them. और इस प्रकार करके उन्होंने हम सबका भी उद्धार कर लिया। And Srila Prabhupada says in a beautiful purport of 9:9-12 of Srimad Bhagavatam, और श्रील प्रभुपाद 9:9-12 के तात्पर्य में बहुत सुंदर बताते हैं, this is the mercy of a devotee, Ganga. ये गंगा जो है भक्ति है भगवान की, उसकी ये कृपा है। Prabhupada makes a very beautiful observation. प्रभुपाद बहुत सुंदर निरीक्षण करते हैं हमेशा। When a devotee goes to Ganga and he or she wants to worship Ganga, what do they do? प्रभुपाद जी बताते हैं कि यदि कोई भक्त गंगा के पास जाता है, पूजा करता है, या व्यक्ति हो या पुरुष हो या स्त्री हो, क्या करते हैं? You will take the water of Ganga herself, आप गंगा का ही पानी हाथ में लेते हैं and then after taking that water, you will offer it back to her. और हाथ में धारण करने के बाद हम गंगा को ही को वापस समर्पित करते हैं। You don't take something outside and bring it to Ganga. बाहर से पानी भर के हम लेकर के और गंगा में नहीं डालते हैं। It's very unique, isn't it? ये बहुत ही यूनिक है। Prabhupada says when a devotee takes water from Ganga, the water in the Ganga does not decrease. प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब व्यक्ति एक घड़े में गंगा का पानी अपने हाथ में लेता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि गंगा का पानी कम हो गया। And when the devotee pours back the water into Ganga, the waters in the Ganga does not increase. और जब भक्त वो गंगा का पानी जो हाथ में लिया हुआ है, वो अंजलि जब समर्पित करता है, इसका मतलब ये नहीं कि गंगा का पानी बढ़ गया। But in both cases, the worshipper is benefited. लेकिन ये दोनों केस में जो पूजक है, गंगा का पूजा करने वाला जो है, उसका फायदा होता है। Same thing with Krishna. कृष्ण के साथ भी कुछ ऐसा ही है। We take leaf, flower, water and fruit and we give it to Krishna. हम पत्ता लेते हैं, फूल लेते हैं, पुष्प लेते हैं और कृष्ण को अर्पण करते हैं। And we give it to him with devotion. और हम भक्तिपूर्वक उनको अर्पण करते हैं। By taking the leaf, water, flower or the fruit, Krishna is not decreased. कृष्ण का पत्ता, कृष्ण का फूल, कृष्ण का ये फल लेने के कारण कृष्ण का कुछ कम भी नहीं हो जाता है। And by offering it back to him, he is not increased. और कृष्ण को वापस देने से कृष्ण का कुछ बढ़ाव नहीं हो जाता। But the devotee who does that with devotional service, that devotee attains so much benefit in devotional service. इसके बीच में जो भक्त होता है, वो भक्तिपूर्वक यदि ये करता है, तो उसका खुद का ही बहुत ही भक्तिमय लाभ होता है। So when we take something and use it for Krishna, तो यदि हम कुछ करते हैं, लेते हैं और कृष्ण के लिए यूज करते हैं, we should remember that thing itself does not belong to us. तो हमें वो समय की याद रखना चाहिए कि ये जो चीज है मैं लेके आया हूँ, ये खुद भी मेरी नहीं है। But Krishna becomes very pleased when we use it in his service लेकिन कृष्ण बहुत राजी हो जाते हैं जब हम उनकी सेवा में कोई चीज को लगाते हैं, and in the service of his devotees. या तो उनके भक्त की सेवा में लगाते हैं। So please remember this beautiful sacrifice that Lord Shiva, Bhagirath did to bring Mother Ganges to this world. तो कृपा करके हमेशा याद रखें ये जो बलिदान है जो भगवान शिव ने और भगीरथ जी ने दिया पूरी दुनिया के लिए। If we want to serve devotees, we should serve them with all our hearts. यदि हम भक्तों की सेवा करना चाहते हैं तो हमें हमारे पूर्ण हृदय से करनी चाहिए। We should welcome them actually. हमें उनका हमेशा स्वागत करना चाहिए। I think some devotees have just come, I think, मैं सोचता हूँ कि कुछ भक्त अभी जस्ट आए हैं, and we welcome them. हम उनका स्वागत करते हैं And welcoming devotees means we must serve them. और उनका स्वागत करना यानी कि उनका सेवा करते हैं।
And always remember that Mother Ganges is very pure as a devotee. और हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि गंगा माता जो है वो बहुत ही पवित्र है। Maybe externally she may not be very clean, बाह्य रूप से शायद वो हमें गंदी दिखे, but do not use material eyes to understand spiritual topics. लेकिन हमारी भौतिक आंखों का उपयोग मत कीजिए आध्यात्मिक चीजों को समझने के लिए। I remember when I went to Vrindavan one time, मुझे याद है जब मैं एक बार वृंदावन गया था and I could not see very nicely और मैं बहुत अच्छी तरह से नहीं देख पा रहा था because I had to take out my glasses. क्योंकि मुझे मेरे चश्मे निकालने पड़ते You know why, right? Because of all the monkeys. थे। क्यों आपको पता है कि मैं बंदरों के कारण। So everywhere I was just looking at Vrindavan, but everything was very blur. तो वृंदावन में मैं जहाँ जहाँ पे घूम रहा था मुझे सब कुछ ब्लर दिख रहा था। And because of that, I could not see the real Vrindavan. I could not even see. तो इसके कारण सब कुछ धुंधला धुंधला दिखता था मुझे, इसलिए मैं सच्चा वृंदावन में नहीं देख पा रहा। So I entered one shop to buy some things for the deities. तो एक दुकान पे मैं खड़ा रहा, अंदर प्रवेश किया और भगवान के लिए कुछ लेने के लिए। And I was complaining, I cannot see Vrindavan. और मैं इसको फरियाद कर रहा था कि मैं वृंदावन नहीं देख पा रहा। And the shopkeeper told me something very nice. लेकिन दुकानदार ने मुझे बहुत ही सुंदर बात कही। He said, don't see Vrindavan with your eyes. उन्होंने कहा कि आप आंखों से अपनी आंखों से वृंदावन को मत देखिए, See Vrindavan with your heart. आप अपने हृदय से वृंदावन को देखिए। So when we also take darshan of Mother Ganges, Yamuna, when we see devotees also, don't see them with your eyes. You serve them with your heart. तो जब भी हम गंगा माता को देखते हैं या यमुना जी को देखते हैं, वृंदावन को देखते हैं या भक्तों को देखते हैं, तो उनको अपनी आंखों से मत देखिए, उनकी सेवा कीजिए हृदय से। And in that way, we will be very happy in devotional service. और ऐसा करने से हम हमारी भक्ति में सेवा में बहुत प्रसन्न रहेंगे। This fire that burns us is actually our fire of envy, criticism, and jealousy. जो एक्चुअली हमारी जो जलन होती है अंदर, वो जलन क्या होती है? हमारी खुद की ईर्ष्या की, निंदा करने की, ये सभी जलन हमको जलाती रहती है अंदर से। Grantaraj Srimad Bhagavatam ki. Jai Srila Prabhupada ki. Are there any questions, any comments, any realizations? क्या कोई किसी के प्रश्न है, सुझाव है? First of all, thank you very much for the session. One small realization I would like to share, I learned from this session regarding I have read somewhere that the Vaishnavas are the desired tree. But I was not knowing the complete meaning of it. But from today's session, I got that realization that why Vaishnavas are desired tree. There are three things around this. The nature of the Lord is equal to nature of the devotees. That is Yes. what we are. Secondly, because they carry Krishna in their heart. Yes. And they are always ready to do sacrifice for the others. Yeah. They do the benefits for others. Yeah. That's why they become the complete desire. Yes. Very nice. Thank you, Prabhu. That's a nice realization. Jai. Any questions? You have question, Prabhu? Please. हरे कृष्ण। He is asking that Bhagirath was bringing Mother Ganga, so he was passing through Janu Rishi's ashram. So when Ganga destroyed the ashram of Janu Rishi, so Janu Rishi drank squeezed her. So then Bhagirath pleased Janu Rishi, so he Came out from the ear. So my question is it that due to that reason we put our Brahmana thread on the ear? Actually, it's not. That's a thing. Because this episode with the Rishi is not found in Bhagavatam. क्योंकि ये जो प्रसंग जो है वो
भागवत में पाया नहीं जाता। It may be found in other parts of other scriptures, शायद शास्त्रों के कोई अन्य भाग में वो हो सकता है, but as far as we are concerned, it is not in Bhagavatam. लेकिन जब तक हमारा निष्कर्ष है वो भागवत में नहीं है। So when something is not in Bhagavatam, we should be a bit careful. तो यदि कोई चीज भागवत में नहीं है तो हमें बहुत ही उसके बारे में सावधान रहना है। Because we may not understand in what version it is, whether it is bona fide. It is safer just to follow whatever that is given in Bhagavatam. तो क्योंकि वो अधिकृत है कि नहीं, वो किस संजोग और परिस्थिति में कहा गया है, उसके बारे में हम अनजान होते हैं। इसलिए हमारे लिए सुरक्षित बात यही है कि हम भागवत का पालन करें। If you read other scriptures, there is a whole journey of Mother Ganga. And in many places, there is like an adventure. But for Bhagavatam, the focus is how Lord Shiva's mercy received another devotee, and how by receiving that devotee, she gave so much benefit to this world. दूसरे अन्य शास्त्रों में यदि आप गंगा की कथा को सुनेंगे, पढ़ेंगे, तो उसमें आपको बहुत ही एडवेंचर मिलेगा। लेकिन इधर क्या है भागवत में कि भगवान शिव की कृपा और कैसे माता गंगा और भगवान के भक्तों का जो महिमा है वो बताया गया है खास करके। Is that helpful, Prabhu? Sometimes we will hear so many different things everywhere. But as devotees, we should check. If it is in Bhagavatam or any of the Gaudiya Vaishnava literature, then we accept. If not, we should be very careful. Unless we have heard it from saintly personalities, then it may be different. काफी बार हम बहुत सारे अलग अलग चीजों के बारे में श्रवण करते रहते हैं, लेकिन हमें बहुत सतर्क सावधान रहना चाहिए कि यदि ये चीजें का वर्णन भागवत में है कि नहीं, या कोई महात्मा के द्वारा किया गया है, कहा गया है कि नहीं, तभी हमें उसको। One of the reasons why we put Gayatri on the right here is that the year that hears Bhagavatam is the year that is pure. And so when we put the Gayatri thread over that year, it is considered pure. It's a pure resting place while we perform an impure action. एक जो कारण है कि जब हम जनेऊ वो हमारे कान में रखते हैं, क्यों? क्योंकि कान ऐसी चीज है जिसके माध्यम से हम भागवतम को श्रवण करते हैं, इसलिए वो शुद्ध है, क्योंकि वो उससे शुद्ध कार्य करते हैं। तो जब भी हम कोई भी अशुद्ध कार्य करने जाते हैं, तब हमारे जनेऊ को हम कान के ऊपर धारण करते हैं, क्योंकि वो भागवतम सुन रहे हैं। Is it all right, Prabhu? Thank you. Mataji's, any questions? Any realizations? माता जी में से किसी का प्रश्न है? Shraddhavan Prabhu, you have something? Yeah. Tomorrow you said that we have to think or we accept that the next to our devotee is a pure devotee. But in practical way, Prabhu, it is very, very difficult to understand that thing that this devotee is next to me and next to that Yeah. pure devotee. Shraddhavan Prabhu is saying that, Maharaj has said this point, and Prabhupada has said it also, that except for us, everyone else is a purer or better devotee. Practically, it's very difficult for us to do it. One way of doing it, Prabhu, is that we must become habituated to seeing good qualities in devotees. Even if a devotee has 10 bad qualities, the one good quality is better than all the 10 bad qualities. That is what we should see. श्रद्धावान प्रभु जी का प्रश्न है कि प्रभु जी ने जैसे कल क्लास में कहा था कि हमारे बगल वाला जो भक्त है वो हमेशा हमारे से बढ़िया और ज्यादा शुद्ध भक्त होता है, तो ये व्यवहार मार्ग में करना तो बहुत कठिन पाया जाता है। प्रभु जी अभी उत्तर दिए कि ये बात सही है कि व्यवहार मार्ग डे टू डे लाइफ में इसको कर पाना बहुत कठिन है, लेकिन हमें आदत पाड़नी चाहिए, आदत लगानी चाहिए कि हम कोई भी भक्त है तो उसके अंदर 10 यदि अवगुण है तो एक यदि उसके अंदर गुण है तो उसको देखें, वो एक सद्गुण के कारण उसके अंदर 10 अवगुण है वो शुष्क हो जाता है। It is not that we don't see the defects in the devotee. ऐसा नहीं है कि हम भक्त के अंदर दोष नहीं देखते हैं। Supposing someone cannot wake up for Mangala Aarti. मान लीजिए कि यदि कोई व्यक्ति मंगला आरती के लिए नहीं उठ पा रहा है, All the time he can't wake up for Mangala Aarti. हमेशा के लिए वो मंगला आरती के लिए नहीं उठ पा रहा है। Someone may say this person is completely a non-devotee because he can't wake up for Mangala Aarti. कोई व्यक्ति शायद ऐसा बोल भी दे कि ये व्यक्ति भक्त है नहीं या भक्त है, क्योंकि वो मंगला आरती के लिए नहीं उठ पा रहा है। But then that devotee is doing so many other services in the day. लेकिन दिन के पूरे दिन में वो अदर सेवाएं बहुत अच्छी तरह से करता है, So we recognize maybe this part he needs to improve. तो हम उसका बस जान कर लेते हैं कि ये भाग में उसको सुधरने की जरूरत है।
But there are so many other good qualities to that devotee also. लेकिन वो भक्त के अंदर अन्य बहुत सारे सद्गुण तो है, And some of those good qualities we don't have ourselves. उसके अंदर जो सद्गुण है वो हमारे अंदर भी तो नहीं है. So this is how our acharyas are very kind and merciful. And by doing that, they actually are showing us how we must live with each other. तो इस प्रकार आचार्य जो होते हैं वो खुद ऐसा करके हमको बताते हैं कि हम एक दूसरे के साथ कैसा बर्ताव करें. So in that way, Prabhu, we can always see goodness in a devotee. तो इस प्रकार से प्रभु हम सभी भक्त के अंदर अच्छाई देख सकते हैं. And we must accept in our heart that even though we may be performing nice devotional service, someone else actually is a better devotee than us. लेकिन हृदय के अंतःकरण में हमें हमेशा स्वीकार करना ही होगा कि भले ही मैं अच्छी भक्ति में सेवा करता हूँ, लेकिन मेरे से भी सवा से कोई होगा है. In that way, our devotional service is protected. तो ऐसा सोचने से हमारी भक्ति की रक्षा हो जाती है. Is that helpful, Prabhu? It's practical, right? Yeah. Very nice question. Vaishasya Prabhu, anything from you? Rishikesh Prabhu, please. The mic. Yes, Prabhu. Yeah. Yeah. One time we were in Radha Rani's place, Barsana, and I had some devotees, and we were in the queue to have the darshan, and the altar was closed. And suddenly I saw one small boy, maybe 18, 19 years old. He came, he was chewing this hookah. And then he came and threw some hookah from his mouth on the floor itself. He went inside to the temple. Opening the altar, he went inside. I was so concerned, and I started saying something, that what kind of devotee is, and like that I was saying. In front of me there was another devotee from the Iskon temple who was standing. He immediately checked me. He said, Prabhu, this is a dham aparad. Why? This boy, what connection he has with Radharani, we don't know. Yeah. Otherwise, if she doesn't have mercy on him, we will not be allowed to go inside and serve. Yes. So lesson learned was that we are nobody to judge. And Maharaj also told us. Exactly. Yes. Who are we to judge? So in any circumstances, when we have the connection, the question we ask that who is a better devotee? We are not the judge for that. Yeah. Krishna knows, Guru knows, Sadhana. So we should simply see everything with our heart and leave it there. Yes. He has some connection, maybe whatever is there, he is doing something. Yes. Good or bad, it is for him. For us, we have come for our darshan of Radharani, and then that's it. Yes. From that only, if you remember, Maharaj told a very nice point when he was in Vrindavan. So, Vrindavan, he was giving the lecture. And one boy, Brahmachari, he got up. He had some questions, like was Maharaj asked. Maharaj, I have a question. What is the question? Question is that there is some malpractices going on in the temple. He started saying that. Yes. Maharaj said, okay, talk. Said, what for you have come to the temple? For seva, doing some darshan. Yes. All these things you have come here. So where is the time to see all this? Exactly. There is no time to see all this. Where's the time to see all this? If we have this tendency of finding fault and checking others, so Maharaj's point was that when you come for a specific purpose, you have come for seva, see the temple, do some service, do that. Yes. Leave aside all these things to Krishna. Yeah. He will take it. Very So nice the point. big lessons learned on that. That we are nobody to check others or judge others. Yes. Whosoever is doing, they have their own relationship with Krishna. Exactly. And the devotees, we should limit to ourselves. Thank you so much, Prabhu. Vaishnav Prabhu, please. Such a nice point. Shraddhavan Prabhu, now it's clearer, isn't it? Yes. यह था पैटर्न लग रहा है.
So I will speak in Hindi. Yeah, please. They will know. Same point what तो जो आज आप बता रहे कि हम पता है दूसरे में 10 अवगुण उनके फिर भी उनमें एक अच्छा गुण हुआ उसको देख के उनके प्रशंसा करना चाहिए और प्रैक्टिस करना चाहिए स्वीकार करना चाहिए। मुझे याद है मैं द्वारका में नया नया ज्वाइन हो गया था मंदिर में गया सुंदर गोपाल और हम लोग राधा रानी मंदिर बॉम्बे इसका लिए क्या बोलते हैं रूल्स रेगुलेशन पे बड़े होते थे ना रूल्स के साथ बड़े होते थे तो वहाँ पर नए गए थे तो उधर के लोकल गार्मेंट्स माना शुद्ध भक्त उनका वहाँ का सभी लोग आकर्षित हो जाते थे तो कुछ गार्मेंट्स रहते थे वो पान वो खाते रहते थे और हम सोच क्या है कि ये सब गलत है ये अपराध है ये नहीं होना चाहिए तो हम सर्व नहीं कर पाते थे और मैं ज़्यादा 10 साल नहीं कर पाता तो मतलब मैं से ज़्यादा डबल नहीं सर्व करता हाँ तो हम तो बुला देखते तो महाराज उनसे आराम से बातें कर रहे हैं मजाक मस्ती कर रहे हैं फैमिलीज के बारे में पूछ रहे हैं थोड़ा महाराज को कभी भी बोलते भी नहीं गुजरते लेकिन फिर भी महाराज ऐसे एकदम स्ट्रांगली नहीं बोलते थे तो हमको अच्छा लगा नहीं और मैं मेरे से रहा नहीं गया फिर मैं 2-3 बार ब्राह्मण को बोलता भी था कि ये क्या द्वारकाधीश के पुजारी है और पान खा रहे हैं गुटखा खा रहे करते हैं वो हमारे ध्यान में लेके चले जाते थे ये सब बहुत बार हुआ मेरे से फिर एक बार महाराज ने ये भी मुझे बहुत झाड़ा दोस्त महाराज ने कहा जैसा आपने कहा उसी तरह कहा ना महाराज ने कहा कि एक बात आपको ध्यान रखना है कि दूसरे को हम कभी कभी जज नहीं कर सकते आउटवर्ड से बाहर से और दूसरी बात ये है कि हम कितना ही 16 वाला जाप करेंगे 64 वाला जाप करें हमको कभी भी भगवान के गर्भत्व में एंट्री मिलने वाली नहीं उनका जो भी कुछ भी है उनके वो इतने भाग्यशाली है कि उनको भगवान के गर्भत्व में एंट्री मिल रही है तो हमारे से वो बहुत बड़े कृपावंत है और भगवान के ऊपर विशेष कृपा करते हैं तो कभी और बहुत डांट के भी निकालता ये कभी किसी के बारे में ऐसा कभी हम सोचना ही नहीं करते वो उनका देख लेंगे हम हमारी भक्ति करें और दूसरे हमको ख्याल रखते हैं तो बहुत नाइस पॉइंट appreciate others good point. Yeah. He has bad points also. Very true, Prabhu. Thank you. Thank you. Thank you. You do one thing. Okay. One more point. Yeah, please. हाँ एक बार अबुधाबी में महाराज आके गए थे और उसके पहले वृंदावन राधा रमन जी टेम्पल Yeah. तो वो महाराज वृंदावन टेम्पल से राधा रमन जी टेम्पल है उनके गोस्वामी जी अबुधाबी आए तो एक भक्त ने क्लास चला था जयदत्त महाराज के साथ तो उनसे प्रश्न किया कि जब ये गोस्वामी जी आते हैं वहाँ से मंदिर से वृंदावन से तो उनको हमको कैसे ट्रीट करना चाहिए क्योंकि वो लोग तो चाय भी पीते हैं ये सब करते हैं तो जयदत्त महाराज का जो उसमें उत्तर दिया उन्होंने जैसे प्रभु जी ने बताया वही बताया उन्होंने कि ये सब जो गोस्वामी जी हैं जिस परंपरा से वो लोग आ रहे हैं महाराज के खुद के शब्द ये थे कि हम लोग उनके सामने कुछ भी नहीं वो लोग जिस परंपरा से आ रहे हैं जैसे वो सेवा करें जैसे क्योंकि गर्भगृह में जाते हैं भगवान का साक्षात सेवा करते हैं उनके चरण दबाते हैं तो इसलिए हमको सोचना चाहिए कि वो हमसे बहुत ऊपर है और वास्तव में महाराज की जो सीख है जो उनकी नीति है वो यही है कि जो भी सामने हमारे है वो तो गोस्वामी है लेकिन बाकी भी जो है हमसे बहुत ऊपर है जब हम मान के चलते हैं तो हमारे अंदर भक्ति का जो है तीव्र वेग उत्पन्न हो जाता है। Thank you, Prabhu. Let's chant Krishna's names. I'll take the mic, Prabhu. Put it on the sound system.